1997. His poem song, Earth Anthem, has been translated into 30 languages and performed by Symphonic Orchestra of National Theatre of Brazil. Sir, it's a pleasure to have you here. Thank you very much. And the second poet is Mr. Sanjay Kundan. He's a writer and poet in Hindi. His published books are Kagas ke Pradesh mein hai, Chuppi ka Shok, Yojanaon ka Shair, all poetry collections, Bas ki Party, Shyamlal ka Akelapan story collections, Tootne ke Baad, Teen Thought, both novels. Recipient of Bharat Bhushan Agrawal Puraskar, Hemant Smriti Samman, Vidyapati Puraskar. Sri Sanjay Kundan is presently working as assistant editor in Now Bharat Times. His poems have been translated into Punjabi, Marathi and Urdu. He has also been contributing to worldwide column in Now Bharat Times for the last few years. Thank you very much, sir. It's a pleasure to have you. As our poetry programs, poetry reading programs are concerned, as usual, we invite each poet to read from their poetry collections for 12 minutes, then next for 12 minutes. Then if they want to ask anything to each other, so you can have a conversation, then we will go for a second round of 12 minutes each. Then if there is a time to be any audience, they can introduce themselves and they can ask questions, they will have interaction. So we'll start with Mr. Abhay. Thank you. Thank you so much for this kind introduction. And thank you all for being with us, basically friends whom I already know. Thank you, Mangesh Raj, for being with us. My pool this evening, Ankoji, and Jyoti. Right. I know you from the other side. This is, I just wanted to know the audience, but I will interact with you later. I'll read from my last 3 collections of poems. First this one is the latest one called The Eighth Agrawal of Kathmandu, which I wrote during my stay in Nepal from 2012 to 2016. Kathmandu nights. In the still of night, a solitary dog barks, a clear face appears, a clock ticks. My deepest desires, gravest fears, come out of their hiding. The moon meanders towards its dark side. A sonorous voice pierces my being. Mustang, a piece of moon rests on the earth, baked for centuries. Shadows of yak herds crawl like ants on a blinding canvas of snow, seeding ever-receding meadows, the brooks of life. The last yak herder of Abhay silently follows them into oblivion. Gandruk, steep climb of the Himalayas. Mules and men walk together, each with their own burden. In a house turned into a hotel, a gurung girl smells of spice, smoke. Her eyes shine with desire. She sweats, her breasts covered with the sky's blue scarf. Lost in the Annapurna, she trades the ancient trails, listening to the bird song.
Arabhat, on the last destination of life's journey on earth, yet no one comes to me walking on one's feet. I know no pleasures but burn whole dead bodies, turning into ash, returning to their elements, freeing from earthly sufferings. All I hear, shrieks and laments, mournful men, wailing women, and crestfallen children. I see faces immersed in tears, rarely a smile to appreciate my thankless duty. The sign. Barley seeds sown in a bed of sand, thick with butter lamps lit in every home. Spring swings everywhere. Ecstatic children know no greater joy. Yellow barley leaves have arrived in a palaki from Gorkha to Kathmandu. Goats that herd in every courtyard lead beneath the cookery slabs. Army officers command the sacrifice of buffaloes. Big guns are ready to fire off booming drums. Military bands play war tunes to appease bloodthirsty Kali. Streams of blood flow from temples and courtyards. Relatives arrive from far, a mix of bright vermilion, curd, and rice shine on their foreheads with a dash of coal drawn from a suit of butter lamps. The doors of Taliju open today. Revelries will linger on till the full moon. This is Rabindra from the words from Daylight Order of Kathmandu. I have done a book on the capital city of Brazil, and it's called The Prophecy of Brasilia, which is about a prophecy. And I'll be going called Brasilia. Brasilia is mostly white. नाम कैसे आए हैं उनके लिए आज ये नाम कैसे आप हमारे सीख रहे तो ब्राजीलिया के ऊपर एक कविता पढ़ रहा हूँ अपनी नई किताब से जो है प्रोफेसी ऑफ ब्राजीलिया। ये ब्राजील की राजधानी के ऊपर एक किताब है। Brasilia is mostly white. Brasilia is red laterite. Brasilia is diaphanous gossamer filled with light. Brasilia is a string of shining pearls at night. Brasilia is an exotic Turkish delight. Brasilia is a coiled serpent ready to bite. Brasilia is a village passing as a city. Brasilia is an expression in supernatural geometry. Brasilia is Italo Calvino's invisible city. Brasilia is a prophecy of Don Bosco. Brasilia is a poem carved in stone. Brasilia is a song of Carlos Drummond.
Brasilia is a diamond in the ground. Brasilia is a giant airplane on the ground. Brasilia is an Amori village drowned. Brasilia is Clarice Lispector sleepwalking on water. Brasilia is black acai palm desert. Brasilia is perfection in Greek and mortar. Brasilia is a piece of space cake. Brasilia is a fantasy island in the lake. Brasilia is a Dominican night shade. Brasilia is the last utopia. Brasilia is Sylvia Plath's dystopia. Brasilia is a landscape utopia. Brasilia is an oasis of migratory birds. Brasilia is an oracle's prophetic words. Brasilia is a page from Harry Potter. Brasilia is a shifting mirage in the desert. Brasilia is a vision gone pale, blurred. Brasilia is a nail yet to be hammered. Okay. मैं कुछ नई कविताएं जो हाल की कविताएं हैं वही सुना रहा है तो बहुत पहले कई साल हो गए जो लगा कुछ नई कविताएं सुनाई जाए और एक कवि को हमेशा की जोखिम लेना चाहिए कि वो अपने रचनात्मक सफर से लोगों को परिचित कराता रहे। तो मेरी कविता है मेरा पता। अपना पता कोई ठीक ठीक कैसे बता सकता है? अब यह पूरी तरह सच थोड़ी ही है कि मैं किसी एक शहर के किसी मोहल्ले के किसी फ्लैट में रहता हूं, और यह भी सच कहां है कि मैं किसी दफ्तर में रहता हूं, 8 से 10 घंटे हो जाना। कुछ जगहों पर हमेशा किसी का पाया जाना वहां उसका रहना नहीं है। कुछ जगहों पर हमेशा किसी का पाया जाना वहां उसका रहना नहीं है। मैं बार बार वहीं चला जाता हूं जहां मैं रहना चाहता हूं, भले ही कोई मुझे किसी बस स्टैंड पर खड़ा देखे या किसी बहुमंजिली इमारत की एक छोटी कोठरी में दूसरे का दिया हुआ काम करे। अपनी मर्जी की जगह पर रहना एक तनी हुई रस्सी पर चलने से कम है। अगर मैं कहूं कि एक रस्सी है मेरा पता तो यह गलत नहीं होगा। और ऐसा कौन है जो मुझे वहां मिलेगा? मिलने वाले सुविधाजनक जगह पर मिलना चाहते हैं। मैं उनसे कभी नहीं मिलता जो इसलिए मिलते हैं कि मुझसे मिला कर सके। उनसे हाथ मिलाते हुए असल में मैं उनका हाथ झटक रहा होता हूं। जब वे अपनी बनावटी हंसी मेरी ओर फेंक रहे होते हैं, मैं उनसे बहुत दूर निकल चुका होता हूं अपने अड्डे की ओर। एक और नई कविता है बोलती हुई चीजें। अब चीजें आदमी से ज्यादा मुखर और सक्रिय थी। वे इंसान से एक कदम आगे बढ़कर फैसले कर रही थी। हो सकता है आप किसी व्यक्ति से मिलने जाएं तो अपने स्वागत में मेजबान से पहले उसके घर के सोफे को हिलता हुआ पाए। इस बात की पूरी गुंजाइश है कि वो सोफा तय करे कि आपको मुलाकात के लिए कितना वक्त दिया जाए, और दीवार पर टंगी एक घड़ी का फैसला करे कि आपको चाय मिले या पानी पर ही टकाया जाए। यह काम मेजबान की कमीज भी कर सकती है, आपकी कमीज का ढंग से मुआयना करने के बाद। वैसे उस व्यक्ति से मिलने के बाद भी यह भ्रम बना रह सकता है
कि उससे मुलाकात हुई या उसके मोबाइल से। एक कविता है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं। तो ऐसा पहली बार हो रहा था कि अर्थशास्त्री चुप थे और शोधे बता रहे थे देश के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। ऐसा पहली बार हो रहा था कि अर्थशास्त्री चुप थे और शोधे बता रहे थे देश के सकल घरेलू उत्पाद के बारे में। वे कुछ कुछ धमकी देने के अंदाज में कहते थे देश बहुत खुशहाल हो चुका है। पहली बार एक हिंसक भाषा में खुशहाली पर बात हुई। चाकू की नोक पर दी जा रही थी शुभकामनाएं। एक दिन एक गुंडा चाकू लगाते हुए कहता, इतनी अच्छी सरकार कभी नहीं है। यह उन्हीं का असर था कि अब केवल सुख पर बात होती थी, कोई अपना दर्द बांटने की कोशिश भी नहीं करता था। तकलीफ पर बात होती भी थी तो कुछ ही संदर्भ में जैसे वह कोई बहुत बड़ी नेमत हो और कष्ट पाकर हम धन में हो गए। एक और कविता है तानाशाह का नाटक। नदियां सूखती जा रही थी पर आंखों में थोड़ा पानी अब भी बचा हुआ था। इस बात को समझता था तानाशाह, इसलिए वह कभी कभी भावुक हो जाता था और अपनी मां के बारे में बात करते हुए आंसू पोंछने लगता था या पिता का कोई प्रसंग छीन देता था। लड़ाइयां ठंडी पड़ने लगी थी पर एक कमजोर आदमी के रक्त में अब भी बची हुई थी थोड़ी आग। इस बात को समझता था, इसलिए कभी कभी वो अपने दैनिक की चर्चा करता था और बताता था कि किस तरह मेहनत मजदूरी करके उसने अपना पेट पाला और अब भी मौजूद है उसकी पीठ पर छाले। उसके दरबारी लोगों को यह बताने में जुट जाते थे, हाँ उन्होंने अपनी आंख से देखे हैं हुजूर की पीठ पर छाले। एक कविता है न्यायमूर्ति, ये 2 खंडों में। हे न्यायमूर्ति, दूर से देखता रहता हूं आपको। हे न्यायमूर्ति, दूर से देखता रहता हूं आपको। आपके शब्द कानों में गूंजते हैं आकाशवाणी की तरह। आप हंसते हैं तो लगता है पत्थर का कोई देवता मुस्कुरा रहा हो। आप जब कहते हैं सबको न्याय देने तो मन भर आता है। कैसे हम तो आप तक ये देव, आप तक आने का रास्ता इतना आसान नहीं। आपको सबूत चाहिए पर मेरे पास सच के सिवा कुछ नहीं। सच को सबूत में ढालना मेरे जैसों के लिए युद्ध से कम नहीं है। सच और सबूत के बीच एक गहरी खाई है श्रीमान, जिसमें उड़ते रहते हैं विशाल डैगों वाले कानून के पहरुए जो संविधान नहीं सिक्कों की सेवा में लगे रहते हैं। आए दिन एक लड़की सिर्फ इसलिए जान दे देती है कि वो अपने साथ हुए बलात्कार को बलात्कार नहीं साबित कर पाती। एक आदमी खुलेआम भीड़ के हाथों मारा जाता है पर उसकी हत्या कभी हत्या साबित नहीं हो पाती। मिलॉर्ड, मैं डरता हूं कि कहीं मेरी बेडौल शक्ल देख आप पूछ न बैठे मैं किस देश का वासी। एक बूढ़े पेड़ में देखा है मेरा बचपन और एक नदी को मालूम है मेरा पता, पर मिलॉर्ड क्या आप उसकी गवाही मानेंगे? न्यायमूर्ति 2। हे न्यायमूर्ति, जब आपकी आंखों में आंसू देखे तो डर गए। लगा कि किसी ने धक्का दे दिया हो एक अंधेरी खाई में। हालांकि आपसे हमारा सीधा सीधा कोई वास्ता नहीं, पर आपको देखकर भरोसा बना रहता है। ठीक उसी तरह जैसे सूरज को देखकर विश्वास बना रहता है कि हमारे जीवन में थोड़ी रोशनी बनी रहेगी। आपको रोके देख सवाल उठा कि आखिर कौन है जो न्याय को भी बना रहा असहाय? मिलॉर्ड, हमारे इलाके में सब कुछ धीरे धीरे आता है। यहां देर से पहुंची सड़क, देर से पहुंचे बिजली के खंभे, देर से पहुंचे स्कूल और अस्पताल, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा संविधान।
कुछ लोग कहते हैं संविधान का रास्ता रोक दिया गया है, कुछ कहते हैं वो आ चुका है पर हमारी आंखें उसे देख ही नहीं पा रही। हे न्यायमूर्ति, आपकी विकलता देख बहुत कुछ साफ हो गया। समझ में आ गया कि हमारे जीवन में अब तक इंद्रधनुष बम क्यों नहीं हो पाया। संविधान I have edited a book called 100 Great Indian Poems, and two of the contributors are here, so in their honor, I think I'd love to read first a poem called Grandfather's Photograph, which I think you already know. It is by Mangesh Dabralji. And grandfather wasn't fond of being photographed, or didn't find the time perhaps. Take just one picture of him, hanging on an old discolored wall. He looks serious and composed, like a cloud heavy with water. All we know of grandfather is that he gave alms to beggars, tossed restlessly in his sleep, and made his bed neatly every morning. I was just a kid then, and never noticed his anger or his ordinariness. Pictures never show your helpless side. Mother used to tell us that when we fell asleep, surrounded by strange creatures of the night, grandfather would stay awake inside the picture. I did not grow as tall as grandfather, nor as composed, but as serious. Still something in me resembles him, an anger, like his ordinariness. I took walk with my head lowered, and every day see myself sitting in an empty picture frame. A poem by Anamika ji, and translated into English. It's called The Door, translated into English by Ritu Menon. I was a door. The harder they beat me, the wider I opened. They walked in and saw a great cosmic burden. When the grinding stops, the spinning begins. When the spinning stops, the sewing begins. Something or other, all day, non-stop. And in the end, my broom sweeps it all up, sweeps up the stars in the sky, mountains, trees, stones, all the shards and splinters of creation, and collects them in a basket, stores them somewhere deep inside, in some corner of the world. I would like to introduction to more of the poems. Okay, so I also have one poem in this one, not being very modest, but it's called Soul Song, and this is the very first poem I wrote, and it's about the Indian philosophy of immortality. So it's I was always here as blowing wind or falling leaves, as shining sun
or flowing streams, at chirping birds or blooming buds, as the blue sky or the empty space. I was never born. I didn't die. I have a book also on Delhi, which I wrote when I was in Delhi about 6 years ago, 6 to 8 years ago. And there's a poem in this called Delhi. My smell, my nakedness entices hordes of human flesh, traders, emperors, marauders. From far away lands, I pose nude up on the hill, below a feast of eagles, possessed, intoxicated. You've seen the neem trees all across the city, and one on neem. Under my ubiquitous shade lie the scattered cities of Delhi. Delhi and I are one and the same. My yellow grapefruits, delicious when ripe, bitter when raw. Only the wise know the difference. Yamuna, withdrawn and sulky, I flow past Delhi like dark silver, caressing the city shores, draining darkness from Delhi's soul. I think it's the season of jamuns, or is it already over? In Delhi, it's over. And there's a poem about jamuns. Chains of black ellipses, litter pavements, astringent flavors. Every monsoon, painting Delhi tongues purple. What about rag diggers? I think there are still so many slums, and we have rag diggers in the city, and they say our faces smudged with charcoal, our clothes saggy and torn, our days lost amidst heaps of garbage, searching for nirvana in discarded tin cans. Nearby a stinking slum, our home, waiting to be metamorphosed into a 10-lane highway. There's a poem about garlic which I want to share with you. The city's leading poet of the 18th century, गालिब, कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने दे, न होता मैं तो क्या होता. You all, I think all of you know the translation. Months of journey on bullock cart, palki, boat, tanga, ika, and whatnot. Delhi, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Banaras, Banda, Patna, Murshidabad. Finally, Calcutta. Then an endless wait to petition Lord Amherst. Double my paltry pension of ₹62. I returned to Shahjahanabad, scorned, divided, my family debt-ridden, my dignity robbed. My brother died in my arms. None of my sons survived. I turned into a stone,
wrapped in human skin, didn't think the worst, the massacre of Delhi. My friends were butchered. I alone survived to take down their corpses hanging from the trees and the lampposts, to usher them into their graves, to lament my destiny. That's, I'll have to find out. But I had written a poem about Dada Shiko, but since then, after I wrote the poem, the government had already taken action on that. So I was reading a poem about the revolving restaurant called Parikrama. My eternal city, every midnight I see you with my clear eyes. Cherish your contours, relish your changing skyline, growing, shrinking, your shimmering lights, your shades of darkness. I sense your changing mood, your lingering lust for blood and wealth, and your deadly established power. So this is one of my favorite poems called Jawaharlal Nehru University. I managed to have a cup of tea 2 days ago at Gangadhara. So this is a poem about my days in Jawaharlal University. I am that heavenly abode of freedom, where idealism still flourishes, at my dialectic dhabas, open past midnight, where peacocks dance under pouring monsoon rains, where khadi-clad damsels make love on the ancient Aravalli rocks, proclaiming the moon to be their only witness, where the breeze of fresh knowledge, blows from faraway lands, day and night, where the poorest of the poor dream with abandon of an equal world free from oppression. Shantipat. Crows on lampposts caw with unknown sadness, bidding farewell to the setting sun. A flock of parrots rocket across the clear bluish crimson sky. Trees abunch with joyous chirps of manas, sparrows, pigeons. Below, the 2 rows of embassies, like the 2 banks of a river of peace, flow to the world capitals from the rising sun. एक कविता है गौ जैसी लड़कियां। अब भी कुछ लड़कियां गौ जैसी होती थी, हर बात पे हाँ करने वाली, मौन रहकर सब कुछ सह लेने वाली, किसी भी खूंटे से चुपचाप बच जाने वाली। हमारी संस्कृति में सुशील और संस्कारी कन्याओं के यही सब गुण बताए गए हैं। गौ जैसी लड़कियों के माँ बाप गर्व से बताते थे कि उनकी बेटी गौ जैसी है। वे निश्चिंत रहते थे कि उनकी नाक हमेशा ऊंची रहेगी क्योंकि उनकी बेटी गौ जैसी है। वे गौ जैसी लड़कियां इतनी सीधी थीं कि समझ नहीं पाती थी कि उनके घर के ठीक बगल का एक इज्जतदार आदमी जिसे वह रोज प्रणाम करती है, असल में एक शिकारी है।
वे तो यह भी नहीं भांप पाती थी कि अपने पति की नजर में वे दुधारू नहीं रह रही। उनकी दुनिया इतनी छोटी थी कि उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि गायों की रक्षा के लिए गली गली में बन रही है सेनाएं। जब उनमें से किसी के चेहरे पर तेजाब फेंका जाता या किसी पर किरासन तेल उड़ेला जाता या किसी के कपड़े फाड़े जाते तो वो गाय की तरह ही रंभाती थी, बस थोड़ी देर के लिए। गौरक्षकों तक नहीं पहुंच पाती थी उनकी आवाज। To match this, I would like to read a poem. It's sort of a response to his. Basically, it's called "The Flower Girl" from his book, the selection of Delhi. Bare to the bone, in tattered garb, freshness of adolescence on my face. I stand near the traffic, bouquets of roses in my tender hands, red, yellow, pink, white, picked up from the graveyard, waving, begging, hoping someone would buy my flowers. A cab driver calls me, bargains, I bleed, take my flowers. He pulls me nearer. I jerk back in disgust, my clothes torn, flowers scattered. I gather myself with my flowers and start again, bleeding. एक कविता है निवेशक। वह मुझे एक गुल्लक समझता है और रोज अपना एक नमस्कार मुझ में डाल देता है। वह एक दिन सूद सहित अपने सारे नमस्कार मुझसे वसूल लेगा। उसके लिए अभिवादन भी निवेश है और धन्यवाद भी। किसी के बालों की तारीफ वो यूं ही नहीं करता। किसी की कमीज को अद्भुत बताते हुए वह अंदाजा लगा रहा होता है कि वह कितने लाख का आदमी है। वह अपनी मुस्कुराहट का पूरा हिसाब रखता है। जब किसी की मिजाज कुर्सी के लिए गुलदस्ता और फलों की टोकरी लिए वह जा रहा होता है, उसके भीतर अगले 5 वर्षों की योजना आकार ले रही होती है। वह सोच रहा होता है कि इस बीमार व्यक्ति से कहां कब क्या काम निकाला जा सकता है। एक कविता है दास्ता। दास्ता के पक्ष में दलीलें बढ़ती जा रही थी। अब जोर इस बात पर था कि इसे समझदारी, बुद्धिमानी या व्यावहारिकता कहा जाए। जैसे कोई नौजवान अपने नियंता के प्रलाप पर अभिभूत होकर ताली बजाता था तो कहा जाता था लड़का समझदार है। कुछ लोग जब यह लिख कर दे देते थे कि वे वेतन के लिए काम नहीं करते तो उनके इस लिखित झूठ पर कहा जाता था कि उन्होंने व्यावहारिक कदम उठाए। अब शपथ पूर्वक घोषणा की जा रही थी कि हमने अपनी मर्जी से दास्ता स्वीकार की है और यह जो हमारा नियंता है उसके पास हम ही गए थे करने कि हमें मंजूर है दास्ता, हम खुशी खुशी दास बनना चाहेंगे। ऐसा लिखवा लेने के बाद नियंता निश्चिंत हो जाता था और भार मुक्त। अब बेहतर दास बनने की होड़ लगी हुई थी। एक बार दास बन जाने के बाद भी कुछ लोग अपने मन के पन्नों पर कई करार करते रहते थे। जैसे एक बांसुरी वादक तय करता था कि वह अगले 50 वर्षों के लिए अपनी बांसुरी किसी तहखाने में छुपा देगा। कई कवि अपनी कविताएं स्थगित कर देते थे। वे लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर दास्ता से लड़ाई का इतिहास क्यों ढोया जा रहा है और शहीदों की मूर्तियां देखकर उन्हें हैरत होती थी कि कोई इतनी सी
पशुओं का धार्मिक होना इतना स्वाभाविक था कि किसी धर्म पशु के धार्मिक न होने पर ही संदेह होने लगता है। अब तो कंपनियों के नाम भी भगवान के नाम पर रखे जा रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि धर्म पशु धर्म भीरु थे। वे अध्यात्म की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, तो इसका अर्थ यह नहीं था कि उनका संसार से मोहभंग हो गया था या वे ऊब गए थे धन बल से। वे कहते जरूर थे कि जीवन निस्सार है, लेकिन उनका पूरा ध्यान मुनाफे पर रहता था। वे कहते थे कि सादगी से रहो, पर उनका अपने ऊपर खर्च जरा भी कम नहीं होता। निरंतर पूजा पाठ और सत्संग के जरिए धर्म पशु यह बताना चाहते थे कि जिसने इहलोक में अब तक मौज किया है वही परलोक में भी राज करेगा। मतलब यह कि जिसके पास माल है मोक्ष भी उसी को मिलेगा। एक छोटी सी कविता है, महिला सुरक्षा करती। जब वह सड़क पर दिखती है मुस्तैद खड़ी, तो कोई उसकी नथ देखता है और चौंक उठता है, अरे यह नथ भी बनती है। कोई उसके हाथों की ओर देखता है और आश्चर्य करता है, अरे ये मेहंदी भी लगाती है। कोई करता है प्रश्न, क्या यह खड़ी रह पाती होगी धूप में घंटों? उस महिला सुरक्षा कर्मी को घूर रहे मर्दों को क्या मालूम कि यह उस औरत की बेटी है जो रोज 10 मील चलकर किसी पीहड़ से निकाल कर लाती रही है पानी। उसी मां ने दिया है उसको अपना कलेजा। हमारी कविताएं लगता है मिलती जुलती हैं। There's a poem in this book called Security Guards. So, इनको I think Sahitya Akademi has done good matchmaking. Security guards. We stand day and night, guarding you, masters. We salute you when you pass by, and sometimes, absently, you ask, how are you? And move on. Do you really want to know the answer? If you want, I will read more, otherwise, I think we are done. We have some time. So, about. Yes. Is that the same title you have? Yes. There's a poem called The Eight-Eyed Lord of Kathmandu. So, Darashiko also be Darashiko. Darashiko. First we read Darashiko. Darashiko. I wandered the streets of Delhi, speaking my name. Dara the scholar, the Sufi, Shah Jahan's illicit heritor. I was trapped and assassinated by my own treacherous brother. I see masters of Delhi have named streets after murderous Aurangzeb. The Darashiko, people's prince, no one remembers, no one cares. very good. But since the road has been named after in Delhi, that's the latest on Darashiko. So I hope the poem had some impact. I have a poem about the title poem of this book called The Eight-Eyed Lord of Kathmandu. The Eight-Eyed Lord of Kathmandu is named after a poem by J. Milton Hayes, who wrote a poem long time ago, almost a century ago, called, his poem was called The Green Eyes of a Yellow Little God. And that was written in 1911, so more than a century ago. This, I thought of Kathmandu, and I thought of the Eight-Eyed Lord of Kathmandu.
There is an eight-eyed Lord, benevolent. There is an eight-eyed, benevolent Lord atop a hill to the west of Kathmandu. Below, in the garden of dreams, in the town, a beautiful girl waits for her lover, perhaps long dead, while the self-born, compassionate Lord forever gazes down. More about Kathmandu. Rains in Kathmandu. When it rains in Kathmandu, it rains nectar. It rains peace. I wish it rained for 100 years, and each drop seeped into me, cleansing me of concupiscence, letting 1,000 Buddhas within. Mountains, I wish to lose myself in your immensity, your torrents, your winds. Let your rocks be my strength, your cascades my fall, your peaks my rise. Siddharth, I must have been cruel to turn my face from my young wife, my newborn, longing for my lullabies. I secretly fled at night without goodbyes, riding my beloved horse, who died exhausted at dawn. When I look back at the forlorn fort of Dilara Court and desolate gardens of Lumbini, I wonder what I have done. This is an old tradition in Nepal called a living goddess. They have a living goddess. A child free from deformities, black eyes, white teeth, sensitive tongue, cuckoo's voice, long slender arms, delicate hands, soft feet, straight hair curled to the right, fearless of men, prepubescent, a living goddess, carried in a palanquin, pulled by devotees, attendants waiting upon day and night, showering rose petals, post-pubescent, a fallen angel, my feet fear touching the ground, left on my own. Can someone help a goddess turn into a human again? Wife of a remittance sender, thirsty for your embrace, I run with goats, climb up the hill, walk slowly down the valley, get drenched in a waterfall. In the evening back home, I look at the clear sky filled with stars. My eyes swell with tears. I wish I could fly. This very moment to you. Our children ask, when will you return? I don't know what should I say. Sometimes I get drunk to forget my miseries. And you. Sometimes I go out with women to the nearest bus stop.
Pashupati Vriddhashram. There are lots of people who are in the stage of life when they are looking towards salvation. And this is a poem called Pashupati Vriddhashram. I am the last refuge of the hapless, the old, with no one left to call their own. Death lurks at my gate every moment, stares through broken windows, ever ready to barge in. I live on handouts, struggling to see another day, hoping a kind soul would walk in today, to feed the old, to offer blankets. In the airy silence of the courtyard, death has taken away one more today. Someone else will take her place. The rest of elder orphans have to wait on sidewalks, at makeshift shelters, abandoned houses in the city. Lumbini, where Buddha was born. A great emperor's broken pillar marks the birthplace of Buddha. Its reflection ripples in the lotus pond. Monks meditate under the fragrant Bodhi tree, seeking dresses of the enlightened. Around it, sleepy villages, covered in mist, wait for Maitreya, the future Buddha. And I think I'll end it with some poems short poems from Brasilia. I want you to travel with me to these cities where I go, I don't know how to take you there, but these are the poems to take you there. There is symmetry in Brasilia. It's called the symmetry of hope, and it is a poem. Neither rectangular nor circular, Brazilia's symmetry is a spiral like a galaxy. Alto Paraíso, there's a city near Alto Paraíso. Brazil, I have to give you a little background to understand this poems. Because Brasilia was a city founded as a utopia, as a dream, and it has lots of inspiration from space. So, and people think that it's a city of the aliens, where aliens come and live there. And the city's architecture is designed in a way which sort of marked for aliens. So, and it's a planned city, a bit like Chandigarh, but the buildings in Brasilia are very futuristic. So the space, the museum, the National Museum looks like a spaceship, and cemetery is galactic, I mean spiral like a galaxy. And so with those, with those sort of monuments in background, you have to read these poems. Then you would be able to get the raw humor which is is hidden in these poems. So there's a poem called Alto Paraíso. It's a city, it's a suburb of Brasilia where there are lots of mystical organizations. They have their offices or ashrams there, lots of mystics live there. In the high paradise near Brasilia, a lady whispers in my ears, in fluent Esperanto, let's go to Disco Porto. Disco Porto is an airport for flying saucers, where you take a flight to space.
National Museum, a forgotten spaceship waiting for a signal from another galaxy. National Library, a huge radio transistor capturing intelligent waves from other galaxies, converting them into books. Jacob Bridge, giant engagement rings, half submerged in the lake, reminding the city of its impending wedding. Divine Comedy in Brasilia. I walk through Inferno, Purgatory and Paraíso of Brasilia every day alone, listening to the bird song. No Virgil to guide me, no Beatrice to enchant. Then there is this. There is a shopping mall called Conjunto Nacional. What to buy here? What not? Everything is on sale. Brasilia, a dream at dawn that is soon forgotten when eyes open. That's बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी और कुंदन जी। मुझे लगता है कि यदि 10 मिनट हम लोग श्रोताओं से भी कुछ फीडबैक लें, कुछ कोई टिप्पणी किसी की हो, 1-2 मिनट की लोग करना चाहें। I like both the readings. I think Abhay, his poems are usually very rich, and it's very interesting to know that he writes poems about all the cities he goes and he stays there. So they are very interesting and at times profound as well. Forrester's Valley poem is a very profound poem, and many other poems. So visually, I think the visual quality of his poetic language is quite interesting and very effective. And Sanjay कहता है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के बारे में, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो हमारी है, हमारी सोशियो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी एक अच्छी बात ये है कि उनका बहुत लाउड नहीं है और हमने तरह का जो सटायर है, जो सटायर मिक्स विद आयरनी, तो एक ऐसा सटायर जिसका आयरनी छिपी हुई है, वो बहुत अच्छी बात है। और ये उनकी निर्देशक जो करता है या मैं कहाँ रहता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। हम ऐसा ही समय यहाँ रह रहे हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छी शाम रही। दोनों बहुत अलग तरह का भी है, तभी दो कविताओं में उनकी थीमेटिक सिमिलैरिटी जो थी बहुत अच्छी। I think and Abhay's poems are the fine tributes to the city. मुझे शहर बहुत पसंद है, हालांकि मुझे बहुत डर भी लगता है, तो वो एक साथ बहुत बड़े ट्रैप में तो बड़े आकर्षक होते हैं, लेकिन जाकर फंस जाते हैं। तो लेकिन शहरों से सभ्यता शहरों से निकली है, हम सब गाँवों से आए हैं, लेकिन गाँवों से सभ्यताएं निकली नहीं है। गाँव की गलियाँ गाँव में घूमती रहती है, शहर की सड़कें शहरों से बाहर जाती है। ये जो मुझे लगता है कि इसलिए भी शहर बहुत आकर्षित करते हैं। तो एक तरह का खास काठमांडू के जो दृश्य हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं एक बार गया था काठमांडू, तो मुझे वहाँ के दृश्य कई दृश्य याद आए। तो ऑफन वो एक विजुअल, एक बड़े स्ट्रॉन्ग विजुअल शुरू करते हैं और फिर अपना
एक टिप्पणी उसमें देते हैं जो कि बहुत अच्छी है। एक और उन्होंने जो किताब भी एडिट की है 100 ग्रेट पोएम्स, 100 ग्रेट इंडियन पोएम्स, तो मुझे अच्छा लगा। उन्होंने ये नहीं लिखा ग्रेटेस्ट, बड़ी बड़ी शर्म लगती ग्रेट पोएम्स ठीक है, अच्छा है। तो इसका नाम ही कहने की कविता है, लेकिन कहता जैसा कि आपने देखा, लेकिन इसमें कुछ कविता है वाकई बहुत अच्छी और अद्भुत कविता है, चाहे पुरानी कविता है वो और ये चाहे नई दूसरी भाषा, खासकर नॉर्थ ईस्ट की जो भाषाएं हैं उनकी कविताएं इसमें बहुत अद्भुत है और वो एक बहुत अच्छी कोशिश है। और मुझे लगता है कि ऐसी हम लोगों का थोड़ा हिंदी में जो लिखने वाले लोग हैं उनका थोड़ा इसके बारे में बड़ा प्यूरिटन किस्म का रवैया रहता है विदेशों में छपने पर या अंग्रेजी में आने पर। जैसे पुराने जमाने में था ना कि भारतीय लोगों को विदेश नहीं जाना चाहिए कि वो अशुद्ध हो जाते हैं, तो ये रवैया हमारी हिंदी में अब तक चलता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अब बहुत अनुवाद हो रहे हैं हिंदी कविता के, हिंदी साहित्य के बहुत अनुवाद हो रहे हैं और वो ब्राह्मणिक जो शुद्धतावाद है वो खत्म हो रहा है और ये उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे उम्मीद है कि आगे ये और भी इसके आगे और भी काम करेंगे। जोड़ना चाह रहा था कि इसका जो है अनुवाद पहली बार ये ऐसी एंथोलॉजी है जिसका अनुवाद विश्व की 6 भाषाओं में हो चुका है और ये पोर्चुगीज में ऑलरेडी किताब आ चुकी है यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पॉलो से ये, और अगले महीने मैं मैक्सिको में होऊंगा इसके स्पेनिश एडिशन के लिए इसके लिए, और इसका अनुवाद जो है रूसी, इटालियन, नेपाली में भी हो चुका है। तो और ये किताब इतनी पॉपुलर हुई है कि इसका सीक्वल जो है 100 मोर ग्रेट इंडियन पोएम्स में अभी एडिट कर रहा हूँ, लास्ट स्टेजेस में है और वो भी अभी आएंगी अगले साल जनवरी में। तो इसमें जो है पूरा ये दिल का रिश्ता है, मैं उन्हीं कविताओं को मैंने चुना है जो मुझे पसंद है। तो ये जो 100 ग्रेट इंडियन पोएम्स है ये मेरे लिए 100 ग्रेट इंडियन पोएम्स है, आपके लिए शायद कुछ और हो सकती हो, तो आप अपनी एंथोलॉजी खुद एडिट करें। और कोई प्रश्न हो नहीं तो हम लोग सब मिलकर चाय पीएंगे। You've always written landscapes. You've used your pen both as a painting brush and a camera, but at times you've also offered inscapes, like in the case of the girl, flower girl who sells flowers and gathers herself. So I just wish that you concentrate more on such characters, because you also read people, not only buildings and architectural marvels, but also people. So Abhay ji, I really want you to talk about characters and offer us more of inscapes, because you have that kind of opportunity and that kind of eye for sticking on the irony, the situational irony, and also the dry humor that connects you to him. तुम्हारी तो कविता का जो irony का वो जो dry humor है और black humor है वो बेकेट की याद दिलाता है, और बहुत ही अच्छे से एक फ्लैश में नैरेटिव पूरा देते हुए बिना एक कमेंट किए हुए जिस तरह से तुम अंदर एक कसक पैदा करते हो कुंदन, उसके लिए तुम्हें बहुत शुभकामनाएं। दोनों का स्थान हो उनके कालबोध में चलता है, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि हम लोगों का कालबोध स्थानबोध में चल रहा है क्योंकि सब अपने जहाँ के हैं वहाँ नहीं। तो एक looking back का जो, I also want you to write a poem on this villages that you've seen in early childhood in Bihar. I mean, I think that'll be a very good idea. बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कई कैरेक्टर्स पे कविताएं लिखी हैं, मैंने आज पढ़ी भी और आपके साथ शेयर करूँगा, और ये बहुत ही अच्छा
सभा है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय बिताने के लिए, दिल्ली को काव्यात्मक बनाने के लिए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद अकादमी की तरफ से। मैं दोनों ही कवियों को देना चाहूँगा, अभय जी को भी और संजय जी को भी, और आप सबको भी जो इतनी बड़ी संख्या में कविताएं सुनने के लिए इकट्ठा हुए। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारी गतिविधियों में लगातार शरीक हो। देश में जहाँ कहीं भी जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा हो, बिना इस हिचक, अपनी हिचक को त्याग करके कि हमें कोई निमंत्रण कार्ड नहीं मिला, किसी ने कहा नहीं, इसको ध्यान में रखे बगैर आप हमारे कार्यक्रमों में लगातार अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें, अपनी सहभागिता करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। आप लोग जलपान के लिए आमंत्रित हैं।